Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about nursing care plan, that is cleft lip and cleft palate. And through this video, you learn this care plan very easily. And this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में क्लैप्ट लिप्ट एंड क्लैप्ट पैलेट का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट क्लैप्ट लिप एंड पैलेट एयर। क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट आर birth defects that occur when a baby lips or mouth do not form properly during pregnancy. Together, these birth defects commonly are called orofacial cleft. तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट क्लैप्ट लिप्ट एंड पैलेट। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन क्लैप्ट लिप्ट एंड क्लैप्ट पैलेट। नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन, ये हमारे स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा। मदर सेज दैट माई बेबी हैविंग डिफिकल्टी इन फीडिंग एंड स्वेलोविंग, सब्जेक्टिव डाटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा होगा यहाँ पर असेस चाइल्ड सकिंग एंड स्वेलोविंग एबिलिटी, ये ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। आफ्टर राइटिंग दिस डाटा वी राइट एट द नर्सिंग डायग्नोसिस। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखने के बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू क्लैप्ट लिप्ट एंड पैलेट। गोल होगा टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये गोल होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग और इंटरवेंशन में हमको पेशेंट के लिए क्या क्या इंटरवेंशन प्लान करना है जिससे कि हमारा गोल अचीव हो सके। रेशनल मीन्स व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो हमारा इंटरवेंशन है उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो हमने प्लान किया है उसको अप्लाई करना है। तो देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर मॉनिटर डेली कैलोरिक एंड फ्लूइड इनटेक। रेशनल होगा recording daily intake will determine whether the infant is meeting nutritional need. Implementation होगा fluid and caloric intake monitored. नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड द डेली वेट ऑफ द बेबी। रेशनल होगा डॉक्यूमेंटिंग डेली वेट evaluates whether the feeding pattern is successful or needs to be adjusted. Implementation होगा डेली वेट रिकॉर्डेड। नंबर थर्ड इंटरवेंशन होगा पर एजुकेट द मदर ऑन हाउ टू मसाज हर ब्रेस्ट एंड निपल बिफोर फीडिंग। रेशनल होगा ब्रेस्ट एंड निपल मसाज विल कॉज मिल्क टू फ्लो फ्रीली नियर द सरफेस फॉर ए कंफर्टेबल सक। इम्प्लीमेंटेशन होगा एजुकेशन गिवन टू मदर अबाउट मसाज ऑन निपल एंड ब्रेस्ट। नंबर फोर देखते हैं इंस्ट्रक्ट द मदर टू अप्लाई प्रेशर टू द एरियोला यूजिंग आवर फिंगर, गाइड द निपल टू the side of the infant's mouth and hold it there during feeding. Rational होगा holding the nipple in the infant's mouth allow the infant to feed with its gum rather than by sucking if sucking is difficult. Implementation होगा पर instruction given about appropriate feeding pattern. नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं encourage frequent burping after feeding. Rational होगा burping will help to prevent aspiration after feeding. Implementation होगा encourage mother for burping. नंबर 6 देखते हैं instruct mother to hold the infant upright or a sitting position while feeding. Rational होगा an upright or a sitting position improves swallowing and prevent risk of aspiration. Implementation होगा mother instructed about feeding position. नंबर 7 होगा instruct the mother who bottle feed to use some cereal to thicken the milk. Rational होगा thicker milk will make swallowing easier due to the increased secretive flow brought about it. Implementation होगा mother instructed for thicken milk. नंबर 8 देखते हैं offer
Small sips of fluid between feedings rest होगा to keep the mucous membrane moist and prevent cracks and fissure that could lead to infection. Implement होगा पर small sips of fluid given. Number 9 देखते हैं keep the infant NPO after the surgery and gradually introduce appropriate diet. Rational होगा after palate surgery only liquids are generally given for the first 3 or 4 days followed by a soft diet until healing is complete. Implement होगा infant kept NPO after surgery. Number 10 देखते हैं avoid feeding milk post surgery. Rational होगा milk tend to adhere to the suture line and difficult to remove. Implement होगा feeding milk avoided after surgery. Number 11 instruct the mother regarding oral care. Rational होगा after feeding always offer the child a sip of clear butter to rinse the suture line and keep it as clean as possible. Implement होगा mother instructed regarding oral care. Number 12 देखते हैं educate the mother regarding the different form of feeder appropriate for baby. रेशल होगा the most successful method for feeding this infant is to use commercial cleft palate nipple that has an extra flange or provide to close the roof of the mouth. Implement होगा education given about different form of feeders. After writing these interventions, we rated the evaluation steps of this care plan. सभी इंटरवेंशन रेशनल इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट केयर प्लान का एवेल्यूशन लिखेंगे. तो यहाँ एवेल्यूशन में हमको लिखना है न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन्ड. तो ये हमारा एवेल्यूशन होगा. तो इस तरह से फर्स्ट केयर प्लान को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड. ये नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड को रिस्क फॉर एस्पिरेशन. तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में subjective data not applicable because this is risk diagnosis, and objective data here assess the newborn's respiratory rate, depth and effort, assess skin color and capillary refill. Nursing diagnosis होगा risk for aspiration related to cleft, lip and palate. गोल होगा to prevent risk for aspiration. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट असेस फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन. रिस्क होगा द इन्फेंट में स्वेलो excess air during bottle feeding causing abdominal distension that may result in upward pressure on the diaphragm and lungs compromising respiration. Implementation होगा पर assessed for abdominal distension. नंबर सेकंड देखते हैं पर सेकंड होगा place the infant in an infant seat at 30 degree to 45 degree. रेस्ट होगा the semi upright position facilitate burping, limits regurgitation of fluids. Implements होगा placed in upright position. नंबर थर्ड देखते हैं allow the infant time to swallow during feeding and provide oral care as appropriate. रेशन होगा allowing time for swallowing will prevent aspiration. Implements होगा adequate time given to swallow and oral care given. नंबर फोर देखते हैं provide oral and nasal suctioning as needed. रेशन होगा to maintain a patent airway and improve oxygenation. इम्प्लीमेंटेशन होगा सक्शनिंग डन. नंबर 5 देखते हैं फीड द इन्फेंट स्लोली एंड बर्प फ्रिक्वेंटली. रिस्क होगा बर्पिंग फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग फीडिंग विल रिड्यूस स्पिटिंग अप एंड प्रिवेंट एक्सेसिव swallowing ऑफ एयर. इम्प्लीमेंटेशन होगा पर फीड स्लोली एंड बर्प फ्रिक्वेंटली. नंबर 6 प्रोवाइड स्पेशल निपल और फीडिंग डिवाइसेस सच एज पिजन फीडर्स विद ए वन वे वाल्व. रिस्क होगा feeding may work better using special bottles or nipples with a wider base. Implementation होगा पर special nipples provided. Number 7 position the infant appropriately after surgery. रेस्ट होगा careful positioning ensure the prevention of injury to the operative site. Implementation होगा पर appropriate position given. After writing these interventions we rated the evaluation steps of this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर तो इवेल्यूशन होगा सेकंड केयर प्लान का रिस्क फॉर एस्पिरेशन प्रिवेंटेड. तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर सेकंड रिस्क फॉर एस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड.
नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 होगा यहाँ पर रिस्क फॉर इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा सेम लिखना है, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द child's speech pattern, articulation, and overall communication skills, assess child for nasal speaking voice. Nursing diagnosis पर is for impaired verbal communication related to structural deformity of cleft lip and palate. Goal होगा the child will communicate effectively and be understood by. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कोलैबोरेट विद स्पीच थेरेपिस्ट रेशन होगा टू डेवलप ए स्पेशलाइज स्पीच थेरेपी प्लान टेलर्ड टू द चाइल्ड्स नीड। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर कोलैबोरेटेड विद स्पीच थेरेपिस्ट। नंबर सेकंड एजुकेट पेरेंट एंड केयर गिवर अबाउट स्ट्रेटजीज टू प्रमोट स्पीच डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन रेशन होगा दिस इम्प्रूव द नॉलेज टू मैनेज स्पीच प्रॉब्लम। इम्प्लीमेंटेशन होगा एजुकेशन गिवन। नंबर थर्ड एनकरेज एंड प्रोवाइड appropriate opportunities for the child to practice verbal communication such as engaging engaging in conversation and participating in age appropriate activities। Additional होगा these practices make communication effective। implementation होगा पर encourage for the practice। नंबर 4 देखते हैं refer to support groups for counseling services। Additional होगा to seek additional support and share experiences with other facing similar challenges। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर रेफर टू सपोर्ट ग्रुप्स एंड काउंसलिंग। नंबर 5 देखते हैं मॉनिटर एंड एवेलुएट द चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन स्पीच थेरेपी। रेशन होगा मॉनिटरिंग हेल्प टू एडजस्ट इंटरवेंशंस एज नीडेड। इम्प्लीमेंटेशन होगा चाइल्ड प्रोग्रेस मॉनिटर्ड। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी रेटेड द एवेल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 3 का एवेल्यूशन। तो एवेल्यूशन लिखना पर द चाइल्ड इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड इज अंडरस्टूड बाय अदर। तो ये था केयर प्लान नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4। नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 तो क्या पर इम्पेयर्ड पेरेंट इन्फेंट अटैचमेंट देखते हैं। सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में पेरेंट एक्सप्रेस देयर एंजाइटी एंड कंसर्न रिगार्डिंग द अपीयरेंस एंड फीडिंग चैलेंजेस एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप एंड और पैलेट। ऑब्जेक्टिव डाटा होगा पर असेस पेरेंटल नॉलेज एंड इमोशनल स्टेट रिगार्डिंग द चाइल्ड्स कंडीशन एंड फीडिंग चैलेंजेस। नर्सिंग डायग्नोसिस पर impaired parent infant attachment related to altered feeding, cleft lip and palate। गोल होगा parents will demonstrate positive bonding behaviors with the infant। इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर प्रोवाइड information and education about cleft lip and palate including its causes, treatment options and available support resources। रेशन होगा to improve knowledge and relieve anxiety। implementation होगा education given about cleft lip and cleft palate। Number second, offer emotional support and reassurance to parents addressing their concern। To promoting a positive parent-infant relationship। implementation होगा पर reassurance and emotional support given। Number third देखते हैं collaborate with lactation consultants। होगा to support and guide parents in establishing successful breastfeeding techniques or alternative feeding methods। implementation होगा पर collaborated with lactation consultants। नंबर 4 देखते हैं प्रोवाइड सेफ स्पेस फॉर द टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस। रेशन होगा पेरेंट्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड कंसर्न ओपनली। implementation होगा सेफ स्पेस प्रोवाइडेड। नंबर 5 रेफर सपोर्ट ग्रुप्स और काउंसलिंग सर्विसेज। रेशन होगा टू seek additional support and share experiences with other facing similar challenges। implementation होगा पर refer to support groups and counseling services। after writing these interventions we write the evaluation steps for this care plan। तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 4 का evaluation। evaluation में यहाँ लिखना है हमको parent demonstrate positive bonding behaviors such as holding, cuddling and engaging in eye contact with the infant। तो ये हमारा evaluation होगा। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 4 के यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5।
नंबर 5 होगा पर रिस्क फॉर इंजरी। देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज this is risk diagnosis and objective to assess suture line for redness, swelling and drainage, assess for respiratory distress following palate surgery. After writing these data, we write the nursing diagnosis. So देखते हैं केयर प्लान नंबर 5 का यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी एंड इन्फेक्शन रिलेटेड टू क्लेफ्ट लिप एंड प्लेट। नेक्स्ट देखते हैं गोल होगा टू प्रिवेंट रिस्क फॉर इंजरी। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन rational and implementation. तो फर्स्ट इंटरवेंशन होगा assess for sign of infection such as fever, pain, pulling on an ear or discharge from the ear. Rational होगा helps in early intervention process. Implementation होगा sign of infection assessed. नंबर सेकंड देखते हैं visualize the inner ear and palpate the mastoid process. Rational होगा to check the sign of ear infection. Implementation होगा पर ear examination completed. नंबर थर्ड monitor lip protective device tapped on the operative site is located to protect the suture line from tension after each feeding or cleaning of the suture line. Implementation by monitor lip protective device tap on operative site. Number 4 perform strict care of suture line is located to prevent infection. Implementation perform strict care of the suture line. Number 5 they provide ordered analgesics for pain and as prescribed. रेशन होगा furnace adequate pain relief so the infant does not cry because this put increased tension on the suture. Implement होगा analgesics given. Number 6 देखते हैं apply soft elbow restraint. रेशन होगा this prevent child from touching or injuries the operative side. Implementation होगा soft elbow restraint applied. Number 7 teach parent about cleansing suture site and applying antibiotic ointment होगा this prevent infection and comfort and healing. Implementation होगा पर and education given about suture cleaning. Number 8 देखते हैं position infant in an upright position during feeding. रेशन होगा to facilitate flow transfer and prevent milk from entering the eustachian tube and middle ear space thus minimizing ear infection. Implementation होगा upright position given. Number 9 देखते हैं apply a balm or cold compress to decrease pain and promote comfort. रेशन होगा a balm compress may be applied locally to increase the child's comfort. Cold may also be beneficial and ice pack may be prescribed to reduce abdominal pressure. Implementation होगा पर balm and cold compress applied. Number 10 increase the fluid intake of liquid and soft food. As indicated, this logo a movement of the eustachian tube such as chewing may increase the pain. Implement this logo increase for liquid and soft food. Number 11 clean the skin around the ear thoroughly. This logo the child may experience ear drainage. Implement this logo skin around the ear cleans thoroughly. Number 12 teach parent feeding methods for the infant and allow them to practice appropriate. This look at this promote nutrition following surgery without sucking or an nipple. Implementation लिखना है education given about feeding methods. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर care plan number 5 का evaluation. evaluation लिखना है यहाँ पर risk for injury prevented. तो इस तरह से care plan number 5 complete हुआ. Next देखते हैं nursing care plan number 6. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 6 एंजाइटी। इसमें नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा मदर सेज दैट आई एम वेरी एंजियस अबाउट अपीयरेंस ऑफ द लिप एंड माउथ एंड डिफिकल्ट विद फीडिंग। ऑब्जेक्टिव डाटा assess the level of anxiety and need for information. नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं एंजाइटी रिलेटेड टू चाइल्ड्स कंडीशन एंड सर्जिकल आउटकम। गोल होगा टू रिड्यूस एंजाइटी। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट ऑब्जर्व द पेरेंट्स इंटरेक्शन विद द इन्फेंट। दिस होगा दिस हेल्प आइडेंटिफाई द पेरेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्फेंट्स कंडीशन एंड हेल्प देम progress toward the improvement of their
कोपिंग स्किल, इम्प्लीमेंटेशन होगा पर मदर इंट्रैक्शन ऑब्जर्व। नंबर सेकंड देखते हैं, डिटरमाइन द पेरेंट्स करंट नॉलेज एंड परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। रीजन होगा द लेक ऑफ इंफॉर्मेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन इंटरफेयर विद family members and the client's response to the defect and the situation. Implementation होगा determine the parents current knowledge and perception of the situation. नंबर थर्ड देखते हैं, encourage sorry encourage expressing concern and questions about the condition, to discuss feelings about the infant's appearance. Reason होगा this provides an environment conducive to venting feelings to facilitate the adjustment to the infant's defect. Implementation होगा encourage for expressing concern. Number fourth, provide an accepting environment and attitude and handle the infant in a gentle, caring way. Reason होगा this promote trusting and convey to parents that an infant is a valuable human baby deserving of love and caring. Implementation होगा accepting environment provided. Number fifth, communicate with parents in a calm and honest way. Reason होगा this promote a calm and supportive environment to reduce anxiety and instill hope. Implementation होगा communication complete with the parents. Number six, allow parent to stay with the infant and encourage them to assist in care as appropriate. Reason होगा this reduce anxiety and promote bonding that may be blocked by an infant appearance. Implementation होगा पर allowed parent to stay with the infant and encouraged them to assist in care as appropriate. Number 7 देखते हैं, inform parent of usual age for cleft lip repair and or cleft palate stage of surgery and type of procedure performed. Reason होगा this provide information to reduce fear and anxiety and to know what to expect. Implementation होगा पर information given to parents. Number 8, refer the parent to additional resources for necessary counseling and support. Reason होगा referral to community support group may be useful from time to time to assist the parents in dealing with anxiety. Implementation होगा referred for additional resources and counseling. After providing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 6 का एवेल्यूशन। तो एवेल्यूशन हो गया पर नाउ पेरेंट्स एंजाइटी रिड्यूस्ड, इस तरह से हमको यहाँ एवेल्यूशन लिखना है। तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर 6 और यहाँ पर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का लास्ट केयर प्लान जो हमने अभी आपको बताया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।